Yeah, everyone is able to hear me? Hello? Yes, sir. Yes, yes. Okay. Let's start a brief introduction of each and everyone. Okay. Speak out the names and just provide your brief intro. If any reasons to join this particular program or investment bank, you can just tell me. Okay. Yeah, Dipti, are you there? Dipti, you are not audible. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Okay. Hi, Yeah. sir. Yeah, go on. Provide your brief introduction. Hello. Yeah, provide your brief introduction. Hi, sir. My name is Dipti. हेलो हाँ या सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सुनाई दे रहा है. Continue. My name is Dipti Anil Mayekar. I am from Ratnagiri, but I am currently staying in Pune. I have 6 family members. Okay. I have completed my bachelor degree in account finance from Mumbai University, and I have also completed my master degree in MBA finance from Mumbai University. Okay. I am joining from Imarticas because growth on my existing knowledge, develop my skill and communication skills, build the basic knowledge, positive attitude, improve my self-confidence. My hobbies is I love playing indoor games like chess and puzzles, listening music. My short-term goal is get a job for a reputed company, and my long-term goal is the achieve the corporate in excellent position for company. Thank you, sir. Okay. Yeah, Disha, are you there? Hello. Disha, are you there? Okay, Gayatri. Yeah, Neeraj. They are not able to. Yeah, Neeraj, are you there? Yes, sir, I am there. Good afternoon, sir. My name is Neeraj Khurana. I have completed my graduation in BCom Banking and Insurance. I am joining Ematicus to improve my skills and get the job. Okay. Akash, are you there? Yes, sir. Bolo. My name is Akash Kasture. I completed BCom from Pune University. Hello. Okay. Yeah, Nikhil. Yes, sir. Bolo. My name is Nikhil Kumar. I am from Patna, Bihar, and I have completed my graduation from Indira College of Commerce and Science. I chose investment banking as a career because I want to learn deeply about investment banking, that's how investment banker work in the corporate, and to upgrade my skills, which I learned during my graduation period. Okay. Nikita? Pratik? Yes, good afternoon, sir. Yeah. Myself, Pratik Survase from Solapur. I have recently completed my graduation in BSc Chemistry. And from past 2 years, I'm doing trading. So as I'm doing trading, my interest toward finance and market is growing. So I joined Imarticus to learn new skills and develop me in a finance market. Thank you. Okay. Yeah, Priyanka? Rohan? Rishikesh? Yes, sir. Bolo. Hello, everyone. I am Rishikesh Pankare. I belong to Varud. About my family, my family consists of 4 members, including me. I had done my MBA, specialized in finance from Nagpur University. After done my master degree, I started to work with Capello as a store manager at Gondia branch. Over there, I had learned various skills such as effective communication, persuasion, client service, and other interpersonal skills. Throughout my tenure with Capello,
I had come across various investment strategies which were used by this company for boost their revenue and overall profit. And I realized that education is the most powerful weapon which you can change the world. So I enrolled myself in MRT investment banking operation program, due to which I can learn, acquire, and knowledge about banking and investor point of view. Okay. And I am thank you, sir. Okay. Who is left? Anyone else? Sammy? Yes, sir. My name is Sammy Sayyar. Basically, I'm from Nadu, but currently I'm residing in Pune. I'm doing BBA in finance. I joined Team Article to improve my knowledge and to get a job. Thank you. Okay. ठीक है. Anyone left from online now? No, sir. Okay. So let's start then. ठीक है. आपके कोई सेशंस हुए हैं अभी तक? Any? So हाँ मतलब सॉफ्ट स्किल्स का हुआ है ना? हाँ. Okay. Okay. Yeah. ठीक है. तो क्या क्या अभी तक हुआ है उसमें? Elevator pitch. एलिवेटर पिच हुआ है. एलिवेटर पिच का सबमिशन बाकी है लेकिन सब करने वाले हो? हो गया सर. अच्छा एक हो गया बोल रहे हैं और बाकी आप 7 days का टाइम है सर असाइनमेंट सबमिट करके सबमिट असाइनमेंट. ओके ठीक है. नो इश्यूज. ओके. चेयर लाना पड़ेगा एक नीचे से. So today we will just have a brief introduction about what exactly is investment banking. थोड़ा उसका overview रहेगा. One. Second, we will discuss about introduction to the financial system. So first topic आपका जो है, okay, that we will go through. And I will be providing. I hope everyone is aware about. Say for example, यहाँ पे introduction to financial system में जैसे for example you have to understand the basics of that how that investment banking is working, how those operations are going on. Okay, तो वहाँ पे कौन-कौन से instruments है, कौन-कौन से participants है, कौन-कौन सी guidelines है, कौन-कौन से entities रहेंगे, all these things will be coming into the picture. Okay, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. So that is what in the today's session or in the coming sessions we will be first of all focusing over that. Assignments. You need to know कि आपके वो पोर्टल पे भी आएंगे जो आपको खत्म करना है, इंक्लूडिंग दैट वीडियो असाइनमेंट्स या जो भी रहेगा वहाँ पे. प्लस यहाँ पे क्लास में मैं जो भी आपको असाइनमेंट्स देता हूँ वो भी आपको करके आना है. However, the marks are included for the online मतलब जो पोर्टल के असाइनमेंट्स है उनके ही होंगे. बट मेरे जो असाइनमेंट्स है like in that particular case you need to make sure that you are going to come over here and complete it. Like say for example अगर आज देता हूँ तो कल के सेशन में वो करके आना है, otherwise वो पूरा लिंक टूट जाएगा. ठीक है. That is more important for everyone. Okay. तो starting के first couple or 3 chapters I guess there are so many assignments that you need to do because that will actually prepare the base of your financial system. That is where you actually need to understand like how all these things are working. ठीक है. Okay. Okay, now, first of all, we will understand what exactly is an investment bank. Okay, what all things the investment banking is doing. Second, and third, how your job profiles are going to be aligned with this particular course. Okay, so now let's suppose, for example, what exactly is an investment bank? An investment bank is nothing that facilitates the clients to manage their funds, right? So say for example, अगर मैं एक client हूँ उसका, and if I am bringing it, say for example, a lot of money over there, yeah. So in that particular case,
how you are going to manage my funds, I myself don't know, right? Like say for example, अगर मेरे पास 10 लाख रुपीस है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? किसी ने अभी यहाँ पे ट्रेडिंग का मुझे कोई बोल रहा था, someone was, yeah, आप नहीं, कोई और तो काम भी कर रहा था ना? Yeah, you were also doing this. कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे? ऑप्शंस, फ्यूचर्स? नो. इक्विटीज, देन कमोडिटीज. ओके, अब वो बॉन्ड्स चलो बाद में आ जाएगा. म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स. अच्छा, कोई एक मतलब लाइक कैसे एलोकेट करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू स्प्लिट दैट 10 लाख रुपीस? Sir, depends on the risk you are willing to take. Okay. So basically, at the end of the day, I think it is going to depend a lot on like how is my risk-taking ability. First of all, how risk-averse I am, whether I am aggressive investor, whether I am balanced investor, or whether I am passive investor, right? अगर aggressive हूँ तो definitely you are going for that equity option. अगर आप, अच्छा, कितने लोगों को equity और debt का difference नहीं पता है? सबको पता है? नहीं पता है? Okay. So start writing the assignments from now onwards only. Okay, सब basic assignments है. Differentiate between equities and debts, or differentiate between equities and debt instruments. Okay. Debt instruments and equities. ठीक है? Differentiate between equities and debt instruments. Debt instruments. Okay. Of course, हर एक का एक chapter allocated है अलग से, but just for the basis कि आप लोग start कर दो अपने end से भी थोड़ा back through reading वाला approach. You have to do that. Okay. Done? Okay. Now let us first of all, before understanding the IB operations, okay, let us understand कि ये सब काम कैसे हो रहा है. Then we will be digging down deep into this particular system. Now say for example, how does any country grow? GDP. What is GDP? Economy. Gross domestic product. हाँ वो पता है, but वो है क्या exactly? नाम full form तो. Yeah. What is exactly GDP? Net revenue of any countries. Okay, सिर्फ revenue आएगा तो no per capita. Yeah, per capita will not come over there. Net revenues, whichever it is being generated. Just, yeah, Pratik, mute your mic. Yeah. It is actually the net income which is generated in any given nation. लेकिन कहाँ से इनकम आएगी पहले वो क्लासिफाई करते हैं. पहले इनकम, हाँ क्या? टैक्स? नो टैक्स. टैक्स विल नॉट कम. टैक्स तो एक्सपेंडिचर में जाएगा. वो खर्च भी तो कर देंगे ना हमारे से. अदरवाइज हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर? या तो आपको पहले एक बेसिक समझ लो. इट इज मोर ऑफ लाइक यू आर अर्निंग एन इनकम फ्रॉम 3 मेजर सेक्टर्स. सबसे पहला बेसिक सेक्टर कौन सा हो सकता है? एनी गेसेस? प्राइमरी इज फाइन. प्राइमरी तो हर कोई सेक्टर है, बट कौन सा हो सकता है? एग्रीकल्चर, राइट? सो एग्रीकल्चर इज योर फर्स्ट सेक्टर जहां से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. या सेकंड डेफिनेटली इज योर इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड थर्ड इज योर सर्विसेज. सर्विसेज में आपका आईटी इज द हाईएस्ट वन. या आईटी, बैंकिंग, फार्मा, इंश्योरेंस, एवरीथिंग विल कम ओवर देयर. ओके, so all, not pharma but healthcare services. So all these things will be coming into that particular GDP. But problem ये है कि हमको वो एक्सपेंडिचर भी तो माइनस करना पड़ेगा GDP में से. ओके, तो नेट रेवेन्यूज ऑन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ करती है? एनी एग्जांपल्स? इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हाँ, डिफेंस, एजुकेशन, देन हेल्थ केयर, डिफेंस, यस. और I think these are the major sectors more or less. Okay. Yeah.
So I guess definitely your expenditures will be definitely coming into the picture of like this major sectors that we are focusing upon. तो आपका net revenues minus net expenditures होगा पहले. Now whatever the total is coming from that, you have to minus the net imports. कुछ हम बाहर से भी तो खरीद रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब like we are आत्मनिर्भर हो गए completely, no, right? So in that case definitely net income minus net expenditures minus imports plus exports. So that is what your GDP is. Clear? Gross domestic product, whatever we are producing, we are eating it up over here, we are consuming it over here, and whatever it is left, we are spending it on our growth. Growth कैसे होता है? Say for example, आप पहले 1 BHK में होंगे, फिर कुछ पैसा इकट्ठा हो गया और तो 2 BHK में शिफ्ट हो गए, फिर वहां से एक डुप्लेक्स आ गया, ठीक है, वहां से कार आ गई, वहां से स्पेन की ट्रिप हो गई, and I think many of those things will be coming into that picture. So that is how you basically grow, right? Otherwise it is not going to show how that economic indicator of your personal life has to be. So similarly your nation will be progressing in the similar line, but based on the like progression of the sectors like agriculture. One, पीछे ले लो. So okay, so your gross domestic product will be coming into all this net this particular income minus net expenditure minus imports plus exports. This is your real GDP that you will be getting. Okay, so write down one question over there. What exactly is GDP? वो definition आपको देखना पड़ेगा एक बार, इसलिए what is GDP? What is GDP? Then what is the current GDP of India? What is GDP? What is the current GDP of India? Okay, अब इंडिया के नीचे 5 और कंट्रीज के नाम बता रहा हूँ, उसके भी जीडीपी आपको एज ऑफ नाउ करंट, तो करंटली आपको पता होने चाहिए. द फर्स्ट वन इज योर यूएस. ओके, द सेकंड वन इज योर यूके. थर्ड वन इज योर फ्रांस. फोर्थ इज योर जापान. फिफ्थ इज योर China, you can take it. Sixth, Australia. और कोई बचा है? रशिया की क्या चलेगा? You can write it down if you want. Germany नहीं चलेगा. Germany is also fine. Germany, Canada and Australia and Germany are almost like more or less on the same line. Okay, so that is not a big issue. Okay, or Brazil is not that much. Sri Lanka. श्रीलंका क्यों लग रहा है? श्रीलंका का वैसे भी माइनस में चल रहा है जीडीपी, तो नो वन इज गोइंग टू राइट दैट ओवर हियर. ओके, अफगानिस्तान भी नहीं चाहिए, ठीक है. नो पाकिस्तान, नो अफगानिस्तान, नो श्रीलंका, नो भूटान. हाँ, सिंगापुर
नो नो, ऑल दिस आर नॉट दैट मच इन जीडीपी. आपको जीडीपी देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स कुछ तो आएगा, वो फिगर आपको लिख के आना है. ठीक है. हाँ 2/9. नो नो नो, इतने काफी है. ओके, टॉप 5 to 10 is more than enough. That is one. Okay. Now second question you have to write it down is that what is the difference between real GDP and nominal GDP? Real GDP and nominal GDP. Difference between real GDP and nominal GDP. Sir, I have a question. GDP सिर्फ कंट्री का ही निकाला जाता है क्या, पर्टिकुलर? तो किसका होना चाहिए इसके अलावा? नहीं सर, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज का जीडीपी वगैरह? कंपनीज का जीडीपी नहीं होगा कभी भी, प्लीज. उनका बैलेंस शीट रहता है, ठीक है, उनका जीडीपी नहीं रहता है. पर्टिकुलर जीडीपी इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एक कंपनी में कंजप्शन के हिसाब से वी कैन नॉट मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ. सर पर्टिकुलर एरिया? नो, नथिंग, नो एरियाज, ओनली कंट्री. ओके सर. ओके. ठीक है. सर व्हाट इट? या वो एरिया वाइज या ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स के हिसाब से या ऐसे कुछ नहीं चलता है. ओके, इट हैज टू बी समथिंग लाइक ऑन द बेसिस of that entire gross national product consumption. It cannot be state wise, it cannot be district wise, it cannot be company wise, and so on and so forth. Okay, तो ये आपको चेक करना है. Now once all these things are done, definitely any country will try to ensure that how this company is going to increase their visibility across foreign nations, right? So say for example, if I want to increase my exports, definitely I need to make sure that my trade investment activities need to increase. And that is the reason that our government or central government is trying to bring in more amount of funds from international countries. Acha, okay. Does anyone know about the 1991 crisis? Liberalization crisis. किसी ने कुछ सुना है? Economics? Anyone? Anyone? No idea? Okay, 1991 में ये पता था कि हमारा जो श्रीलंका का हाल है करंटली, फर्स्ट ऑफ ऑल वही हाल हमारा हो गया था. सेकेंड, अवर लाइक जो हमारा मेन ट्रेजरी रहता है और वॉट एवर इट इज, इन दैट पर्टिकुलर केस वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ मच अमाउंट ऑफ सरप्लस मनी डू वी हैव. व्हाई? बिकॉज वी नीड टू सी. ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि कितना भी चाहे आरबीआई पैसा छाप ले, प्रिंटिंग मशीन डाल दे, हर एक को दे दे कि आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज ईच टू एवरीवन. डू यू थिंक अवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू गेट सॉल्व्ड? इन्फ्लेशन बढ़ेगा. ओके, वो बाद में we will see the correlations, what exactly is inflation and how it is correlated. But on the other hand, you need to make sure how that our country is going to ensure that how much net amount of reserves do we have. Reserves क्या होता है? Either in terms of your dollar reserves or in terms of your bullion or rather gold reserves. Though there are only two instruments against which you will be able to print your money. अदरवाइज तो वही प्रॉब्लम होगा ना कि आई होप एवरीवन नोज दैट कि जिम्बाब्वे में वो 1 करोड़ का एक नोट निकाला था जिसका वैल्यू शायद हमारे 10 रुपीज के इक्विवेलेंट भी नहीं था. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इन्फ्लेशन कहाँ तक जा सकता है. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस इन एनी गिवन कंट्री. तो आपका अभी से एक होमवर्क ये है, एवरी डे कितने लोगों को डायरेक्ट एक्सेस है आई डोंट नो, अदरवाइज यू कैन इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर मोबाइल ऐप विद इन यू, दैट फाइनेंशियल टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स. कितने लोगों के पास है अभी एज ऑफ नाउ? ओके, एनी? अच्छा, जिनके पास नहीं है, आज से आपको एक आर्टिकल पढ़ना है एवरी डे. ठीक है, राइट अ समरी. हर एक के पास लिंक्डइन है. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज रीड वन आर्टिकल. ओके, हाईलाइट दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज और जार्गन्स. वाई? क्योंकि ऐसे बहुत सारी अभी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज आएगी जहां से आपको मतलब समझने में शायद डिफिकल्टी होगी, या तो फिर वही जार्गन को आप यूज कर सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यूज. सो आपको 3 चीजें एड्रेस हो जाएगी उसमें. योर कम्युनिकेशन और लाइक योर इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स, 1. सेकंड, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज और जार्गन्स, सेकंड. एंड थर्ड, इट हैज टू बी लिंक्ड डायरेक्टली विथ योर करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स आप लोगों का वो अभी एज ऑफ नाउ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा.
slowly and steadily, like after 1 month's period of time or 2 months period of time, it will grow. ठीक है? तो you have to build your base from here onwards. तो हर रोज आपको एक पोस्ट करना है. Okay, I hope everyone is on LinkedIn. प्रोफाइल अपडेटेड है सबका वहां पे? किनका नहीं है? Yours is not there. आपका नहीं है. तो आज जाके पहले वो अपडेट कर दो. अपडेट कैसे, मतलब वॉट एवर योर एजुकेशन इट इज एज ऑफ नाउ, और आप लोगों को कोई ना कोई तो सिबोक का एक मिल ही जाएगा, तो उसका प्रोफाइल थोड़ा बहुत देख लो. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ लिंक्डइन प्रोफाइल. स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्या क्या लिखना होता है, व्हाट ऑल थिंग्स नीड टू बी एड्रेस, तो वो ऐसे ही लिख दो. लेकिन इमाटिकस कंप्लीट हो गया वो मत लिख देना वहां पे. दिस इज जस्ट योर फर्स्ट डे टुडे. या ओके, तो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन राइट अ पोस्ट. फेसबुक पे इतना सारा लिखते ही हो, यहाँ पे थोड़ा लिख दो बाद में. एक आध रील्स कम निकाल देना ऑन इंस्टाग्राम्स. ओके, ठीक है. सो यू कैन डू इन दैट केस. सो योर होमवर्क एवरी डे हैज टू बी लाइक one article every day from Financial Times or from Economic Times. Highlight the technical jargons. Okay, उसका लिस्ट अलग से प्रिपेयर करके रखना कभी भी. It can be useful. And start updating your current affairs. Is it clear? Okay. Every day आपको एक और चीज करना है. मनी कंट्रोल एप्लीकेशन कितने लोगों के पास है? Okay, so more than half of the class is not having. तो मनी कंट्रोल एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है. ठीक है? Okay. Sir, in money control, the money control articles are not free. You have to buy subscription. Money control? Sir, in money control, the most of the articles are not free. You have to buy Money Control Pro. Sir, the articles related to GDP and new startups are in Money Control Pro. Okay, no, I am saying for tracking the markets. I'm not saying for the articles. Articles तो आपको Financial Times, Economic Times में से ढूंढ कर लिखना है. Okay, there is no other option for that. Start writing and just write a small summary. Okay, पूरा आर्टिकल की तरफ पूरा वो 3-4 पैराग्राफ मत लिख देना वहां पे. Keep a very short summary, learning for the day करके, और आपको फिर हैशटैग यूज करना है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हैशटैग नॉर्दर्न ट्रस्ट, हैशटैग एक्सा, हर एक में करते रहना. Don't put all the investment banking names into one post. Don't do that. एक पोस्ट में एक ही आईबी बैंक का नाम लिखना है आपको. ठीक है? तो एक में आपने से फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न ट्रस्ट लिखा है, तो दूसरे में BNY Mellon, थर्ड में यू कैन डेफिनेटली राइट एक्सा, फोर्थ में E-Clerks, फिफ्थ में सिटको. दिस आर द 5 to 6 मेजर कंपनीज व्हिच कम फॉर प्लेसमेंट्स ओवर हियर. तो क्या होगा कि ऑन एन एवरेज आफ्टर से फॉर एग्जांपल 30-60 डेज आपका कम से कम 30-60 पोस्ट चला गया होगा, इंक्लूडिंग योर लेवल 1 and 2 टॉपिक्स along with the current affairs. So that will actually bring you to a very like एक अच्छा प्रैक्टिस बन जाएगा आप लोगों के लिए. रिवाइज भी हो जाएगा. एट द एंड ऑफ डे if you want to revise any of the two topics, it would be much more easier for you. Yeah, तो ये सब आपको प्रैक्टिस आज से ही करना है. I hope everyone is having time to do all these things. कॉलेज वगैरह रहेंगे, उनकी एग्जाम्स आती जाती रहेगी, लेकिन ये करना पड़ेगा. If you want a job, which I think at the end of day आप लोग उसी के लिए यहाँ पे आए हो. Yeah, किसी ने ये बोला ही नहीं है why investment banking or why SIBOC. Yeah, at the end of day everyone is here for the job. Except anyone is having some different objective, then there is a different story. Okay. Yeah. Okay. What else? Moving forward, let us check. So now we have gone through this understanding of like how the economic activities are taking place. We were talking about the 1991 crisis, right? उस time पे ये हुआ कि हमारे reserves इतने कम हो गए थे कि it was like difficult to sustain. We could even have gone bankrupt in that case. At that time, कौन थे हमारे FM? Manmohan Singh was there. Yes. So basically, he suggested for the liberalization policies. What was there? कि कोई भी जो foreign companies है, they will be asked to come over to India and set up their manufacturing plants. Okay. What will happen because of this? Employment will get generated. Government will earn income from the taxes. Okay. धीरे धीरे economy stabilization पे जाएगी. So this was the objective like of bringing all these particular foreign players into India. So can you name any companies of foreign countries which are as of now operated in India? Any company from any sector? Sir, Ford. Ford, okay. Ford Motors. Then Hindustan Unilever. Britannia.
नहीं, Britannia is not there. Britannia. Nestle. Nestle is there, yes. Nestle is not in Maggi खाते हो ना? तो Nestle is definitely not an Indian company. Yeah. Then P&G, Head and Shoulders या Pantene जो भी है या कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, but at least नाम सुने हुए हैं. Yeah. Okay. Yeah. Coke, no, Coke is not a direct any subsidiary नहीं है कोई. Varun Beverages is the company, but that is handling different things. Okay. Best ये which is that particular Jubilant Foodworks सुना है? हाँ, तो उसका कौन सा प्रोडक्ट है? Domino's. Domino's, yeah. So Domino's is not an Indian product. अच्छा, तो McDonald's का कौन सा है? Parent company? Sir, Devyani International. No, Foodcast. They are having a separate entity in India. That is a different thing. But basically, at the end of the day, McDonald's or KFC, they are not of India. Okay. Yes. कौन सा है? कहीं पे सुना है? Okay. So write down a list of 10 companies. Write down a list of 10 companies. Okay. Of foreign locations which are operating in India. Sir, can you repeat? Write down a list of 10 companies of foreign locations which are operating in India. Done? Okay. Similarly, can anyone tell me any Indian companies which are of course Indian origin but operating in foreign countries? Yes. हाँ बोलो कौन सी? TCS. TCS, okay. All the IT companies will be definitely coming. हाँ तो IT के जितने भी है उसके IT सेक्टर के अलावा Bajaj Tata sir. Steel, Bajaj Motors. UK है, okay. They have their plant over there. Yes. Okay. Sir, Bajaj Motors. Range Rover, no, it is not a listed company, but और Bajaj all the Motors. banks को भी तो ले लो, HDFC Bank, Bank of HDFC, Baroda, yeah, Hindustan Unilever, ICICI, all of them are having foreign branches. Infosys. SBI, yes, ठीक है. तो दो तीन सेक्टर ऐसे पकड़ लोगे तो you will be able to identify. ठीक है. अच्छा ये चीज हो गया. This is done. Now in further case, this is clear why liberalization was adopted in 91. Okay. So same things now, as of now, what we are focusing upon, we are still trying to invite more number of foreign players everywhere across different states of India. Definitely for economic development. The economic development कैसे होता है? Education, of course. Second, infrastructure, and third, by generating employment. Yeah, and healthcare sector. On an average, all this covers up your economic growth over here. This is how definitely you will be able to understand what exactly all things are going in India. ठीक है. इसके ऊपर से फिर पता चलता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आता है, क्यों आता है और कितना आता है. ठीक है. So the major entity that invests into India or Indian capital markets are no one but other than the FIIs, जिसको बोलते हैं foreign institutional players, okay, और foreign institutional investors, FIIs, और local को क्या बोलेंगे? Domestic institutional investors, DIIs. Okay. So write down one more assignment question. Identify 5 companies or players. Identify 5 players operating into FII and DII category. Identify 5 players operating into FII and DII category.
Done? Okay. Now, one thing is definitely sure. अच्छा, एक example DIA का बता देता हूँ. Who is the largest player? Who do you think can be like at a domestic level जो invest करता है capital market? Rakesh Jindal. No, he is not an DII player. Huh? Sir, HDFC AMC. Which is the largest player? Indian government no करने Indian yes, LIC is the largest player. Okay, LIC invest into more or less like every Indian equities, every Indian money market instruments, हर जगह पे invest करता है. Everywhere कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, लार्ज कैप मिड कैप में हर एक जगह पे LIC का कम से कम 3% 4% इक्विटी स्टेक है. LIC के पास वरना बिजनेस मॉडल क्या है? अगर आप LIC का प्लान ले रहे हो, ओके, विथ एन ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली टू गेट सम रिटर्न्स इन द फ्यूचर, राइट? LIC के तो वैसे ही प्लान है ना, इंश्योरेंस, पेंशन एंड ऑल दोस थिंग्स. तो उनको कहीं से भी तो वो पैसा डबल करके आपको देना पड़ेगा. कहाँ से करेंगे वो? Yeah, they are going to invest into this capital markets and money markets, and this is why LIC is the largest single DII player in the Indian capital markets. Okay, that is one. Now, secondly, once all these things are coming, then definitely India needs to be in a position that they need to have good like companies over here कि जहाँ पे वो invest कर पाए. Say for example, like if any FII player wants to invest over here, they will be definitely investing into companies like Reliance or TCS or any other L&T or I think any other group except Adani Group. I will not suggest as of now. Okay. Yeah. So there are many such companies going on here and there. Okay. So based on that particular aspect, then these companies need to perform. अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करना है, what does that mean? Generate revenues. Okay, then what could be else? Generate profits. Yeah. Huh? नहीं, anything else? अगर कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना है, then to expand the business. Okay, expand the business definitely will result into higher revenues, right? Debt कम होनी चाहिए. Okay, then new projects में investment. Okay, like example, अगर कोका कोला का है कंपनी तो वो कौन से नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा? अच्छा, यू मीन कि नया सॉफ्ट ड्रिंक की लॉन्च कर दे मार्केट में, तो नया वैसे ही होगा ना. अदरवाइज हाउ दैट कंपनी इज गोइंग टू एक्सपांड देमसेल्व्स? या नो नो, बट वो कब करेंगे? कुछ होना तो चाहिए ना पहले, एक्स्ट्रा पैसे, तब जाके बोनस शेयर्स देंगे ना. Buy a mid cap and not like that. No, not like that. Anything else besides this? So एक चीज समझो कि पहले तो रेवेन्यूज आने चाहिए. Sales normally, typically, the amount of sales, the way it should increase, in that way definitely it will help you. Okay, अब सेल्स बढ़ेगा तो रेवेन्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? Profits. Yes, so definitely you're after subtracting all the expenditures, you need to ensure that based on whatever the revenue, हाँ, तो मेरा profit base बढ़ना चाहिए, तब जाके तो मैं I will be able to distribute the profits ना to my shareholders. This is how that entire cycle has to work. So tomorrow if I am launching one product, I am generating revenues. Subsequently I am investing into silent date. Okay. So subsequently you need to launch another product in the market, and that will be also allowing you to generate more amount of profits. Correct? But then this is how all these things are working. Like जितना company और profit करेगा, तो अगर debt लिया है, debt is what, it's more of like a loan, nothing else. ठीक है, कभी ना कभी तो return करना है. So after that point onwards, you need to understand कि how this company is going to grow. Okay. So just write down one more assignment question over there.
Identify 5 debt-free companies listed in India. Identify 5 debt-free companies. Okay. Any listed in India, so it can be anyone. Okay. Generally, you will find it Indian companies only over here. Okay. ठीक है. Now further, you need to understand once these companies are growing, then just you can tell me like what amount of shares or like what could be the impact on its share price? If the company is doing good, उसका profits बढ़ रहा है, उसकी debt कम हो रही है, so definitely you will understand कि हाँ ये मतलब investors को attract करेंगे. Okay, why? Because the share price is going to increase in that case. This is how all these things are going to work, right? Otherwise, definitely, otherwise we will find it difficult to adjust all these things in some way or the other. Okay. Now, furthermore, we need to even find out once all these companies, out of all these companies are going to be in some or the other way, we need to understand कि हर कोई company अच्छे ही perform कर रही है. Then how we are going to bifurcate them? Okay. So just write down one more assignment. See, starting के 2-3 lectures में रहेंगे आपको बहुत सारे assignments because these are the very basics. Okay. Define large cap, mid cap, and small cap companies. Large cap, mid cap, and small cap companies. Okay. Now, based on that particular large cap, mid cap, and small cap companies, you will be able to identify certain examples into each. तो उसका definition लिख के हर एक categories में आपको 5-5 companies के example लिखने हैं. So write sub question लिख दो. Write 5 examples of each. Okay. Write 5 examples of each. Okay. So in large cap, 5 companies, mid cap and small cap. 15 company names you have to write it down. Okay. Done. Okay. Now, once all these things are done, definitely we will be able to understand like how the stock market, जिसको capital markets भी बोलते हैं, all these markets are working. ठीक है? Say for example, how this capital market is structured, how this entities like buyers and sellers are coming over here, how this particular SEBI plays a role over here. जैसे regulatory authority है SEBI. I hope everyone is aware about yeah SEBI and RBI. ठीक है? हाँ तो ये दोनों entities कैसे regulate करती है markets को one. And second, definitely how they're monitoring all the transaction mechanisms. Okay? So this is more or less like that brief structure of how the financial markets are working. Okay? धीरे-धीरे जैसे 91 से 2022 as of now जो भी हमारा चल रहा है, तो based on the growth that we have recognized, based on whatever growth we have seen, like say for example, if you have observed in 1990s, तो हमारा stock market कितना था उस time पे? Sensex कितना था? Any idea? 600 वो 85s to 90s में था. Around 3 to 4,000, max 5,000 maybe in 1995 around. Okay. अभी कितना चल रहा है? Sensex 40,000. Yeah, almost near to that. Okay. Almost 12 times growth we have witnessed. तो इसका मतलब ये होगा कि अच्छा मान लो कि 95 में 5,000 था, 2022 में हो गया 60,000. तो टाइम स्पेंड कितना हुआ? 30, almost 15, yeah, 27 years, so like 28 years. Okay, so 27 to 28 years in that time frame, अगर 12 गुना पैसा बन रहा है ना लोगों का in one or the other way,
जनरली इफ यू इन्वेस्ट इनटू एफडी, कितना चल रहा है रेट ऑफ रिटर्न एफडी में? अराउंड 6%. ओके, तो 6% में कितना, अगर इफ आई वांट टू डबल माय मनी, कितना टाइम लगेगा? 5 years. 30% होगा फिर तो, सिर्फ 100 चाहिए. ऑलमोस्ट लाइक 12 to 14 years कंपाउंडेड, अगर वो भी हम कंपाउंड करते हैं तो. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कंपाउंडिंग इफेक्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना हो सकता है वहां पे. तो अगर आप 10-12 साल के बाद आपका डबल हो रहा है और यहाँ पे 27 साल में 12 टाइम्स हो रहा है, कैन यू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस नाउ? ओके, so that is how all these things are operating or working over here. ठीक है, otherwise it is not going to be an easy one. ठीक है, ये थोड़ा हमको समझना पड़ेगा. Okay, further we need to even understand how money markets are working. अब money market चीज क्या है कि अच्छा एक चीज समझो, हर कोई इक्विटीज में डालने के लिए वो नहीं होगा except for our generation, जिसको जल्दी पैसा चाहिए. ठीक है, एक का डबल करने वाले हम लोग ही है. ओके, डू आस्क योर पेरेंट्स एंड टेल देम कि वी वांट टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट. हाँ, तो रिस्पॉन्सेस मुझे कल बता देना कि क्या बोल के है. हाँ, क्या बोला होगा. ठीक है, ओके. Further we need to even understand what type of instruments are available in the money market instruments or the debt market instruments. Okay, what different types of authorities are there, what types of other entities are going to be there, which we will be using or which we will be guiding for buying the money market instruments. Okay, so this is going to be a third chapter. Second is going to be your cash equities, that is your capital markets. First it is going to be this introduction to financial system. Okay, we are going slowly. Just एक बार आपका थोड़ा वो बेस बन जाए, like in the first couple of chapters or up to 3 chapters, then we will be increasing the pace. Okay, fourth chapter is going to deal with your fixed income securities. अब जैसे, can anyone give me one example of fixed income? Bonds. Okay, एक सिंपल बहुत कॉमन एग्जांपल. फिक्स्ड डिपॉजिट, आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना हुआ है. रेंट, रियल एस्टेट, फिक्स्ड इनकम. मशीनरी कैसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का हो गया. एफडीज कैन बी वन. देन पेंशन और पेंशन फंड्स. ओके, तो वो एक आपको स्टेडी और रेगुलर इनकम देगा ना जब व्हेन यू रीच एट द एज ऑफ 60. ओके, सो एट व्हाट एज डू यू वांट टू रिटायर एवरीवन? अच्छा 60. हाँ, 68, 58. वो अच्छा 58. ओके, ठीक है. ओके, देन सो यू विल बी प्लानिंग समथिंग फॉर योर रिटायरमेंट. उस टाइम पे चाहिए ना, तो अभी से इकट्ठा करना पड़ेगा कुछ हमको. या कितना फंड चाहिए उस टाइम पे? कैन एनीवन गेस? व्हाट इज द करंट एज ऑफ एवरीवन? एवरेज 25. 21 प्लस तो कोई नहीं होगा. 23. ठीक है, 20. ओके, 25 आई एम एज्यूमिंग. ओके, नीचे होगा ऊपर होगा वो देख लो आप. ठीक है, but on an average, which means you are having around 35 years. Are you really ready to spend your job time 35 years down the line? अच्छा 35 साल नहीं करना है, क्या करना है फिर? तो कितना करना है? 10 साल बहुत हो गया. अच्छा 10 साल बहुत हो गया. ओके, देन तो क्या करने वाले हो बाद में? बिजनेस. ओके, वो सेल्स कितना करना है? बाकी लोग पीछे 20 years, 30 years आराम से. 15 years. अच्छा 15 से आगे नहीं होगा. हो गया. ओके, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख ही लेते अभी से. इन्वेस्टमेंट बैंक को बोलते हैं 15 साल से आगे डोंट हायर मी. बहुत हो गया, 15 साल इज मोर देन इनफ. क्या देन डेफिनेटली क्या करोगे? घर वापस, है ना? हाँ, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम पुणे प्रॉपर, राइट? या बहुत सारे आज तो सिटीज लाइक इवन इंक्लूडिंग कैलकाटा आई एम हैविंग इट ओवर हियर. ओके, या सो देन व्हाट इज द प्लान फर्दर? कैसे पेंशन कैसे इकट्ठा करोगे? एनी आइडियाज? कुछ सोचा है? पैसिव इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट. अच्छा एक चीज बताओ, व्हाट कुड बी योर एवरेज इनकम और सीटीसी यू आर एक्सपेक्टिंग?
5 और बाकी 5 वाले, और नीचे कोई नहीं है? अच्छा, ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं है। 3.5 है। ओके 3.5 है, ठीक है, विच मीन्स 6 डबल ही कर देना है। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ उससे नीचे तो आई कैन ऑल्सो, ठीक है। ओके लेट अस एज्यूम 3 लाख स्टार्टिंग रखते हैं, वो कैलकुलेशन के इजी या 4 लाख, चलो राउंड पकड़ के चलते हैं। ओके तो 4 लाख का मतलब क्या हुआ, कितना पैसा आ रहा है हर एक मंथ आपके पास? 30 से तो ज्यादा होगा, 35। लेट अस कीप इट डाउन टू 40,000। चलो आपको 5,000 बोनस देता हूँ। ओके ठीक है, 5,000 का बोनस ही चाहिए होता है पहले। ओके या तो हो गया, इन दैट केस 40,000। ओके नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज योर ऑन एन एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर्स? 20,000 बस 10,000 में हो जाता है हर एक का। 20,000 नियर अबाउट। मुझे भी सिखा देना प्लीज, आई एम गोइंग टू कम टू। हाँ कितना होता है पर पर्सन? 20,000 आपका। ओके बाकी लोगों का 20? हाँ यस सर, 15 to 20 फैमिली नहीं, सिंगल, अभी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा एक मिनट, होल्ड ऑन, टेल मी वन थिंग। ओके वेट। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे जो नॉन पुणे है, मतलब रेसिडेंट्स कहाँ पे रह रहे हो? पीजीज? नो नॉट लाइक, एरिया तो आप अलग ही होगा, बट लाइक यू आर स्टेइंग इन लाइक पीजीज और हॉस्टल्स और समथिंग लाइक दैट? फ्लैट्स। ओके उसका कितना रेंट है एवरेज? 18,000। आपका रेंटल कितना आता है? 6,000। अकेले तो 18 नहीं दे रहे होंगे ना? ओके तो ऑन एन एवरेज 6,000 वी कैन एज्यूम। ओके खाने पीने का कितना होगा मिला के? 4,000 4 पर मंथ? Yes sir. ओके अच्छा, देयर आर नो Zomatos and Swiggies over there? No. अच्छा ओके 10,000 हो गया उसका। देन व्हाट एल्स? ट्रैवलिंग में बहुत जाता होगा है ना? हाँ 5,000 रुपए पर मंथ आराम से। 3 to 4,000 नहीं 3 to 4,000। 4,000 ओके 15,000। ओके और कोई बर्थडे पार्टीज नहीं आती है ना मंथ में? नहीं। अच्छा वो फ्री में होती है ना? हर एक कोई फ्री में आता है? हाँ देते हैं सर, देते नहीं है। फ्रेंड्स को खिलाना पड़ता है सर कभी कभार। तो कितना होता है वो सब मिला के? 2 to 3,000 इन टोटल। तो वो तो डेली नेसेसिटीज अभी आई नहीं है, वो ग्रोसरीज बाकी है, तो ग्रोसरीज आर पेंडिंग। Yeah, 20,000 for including groceries and 5,000 to 10,000 depending on the different expenditures. ठीक है तो 30 हो गया। Okay, this is like we are talking of 1 month, right? अभी मोबाइल का रिचार्ज, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज इज पेंडिंग। और बाकी सब आप लोग जो वो पार्ट टाइम जो शाम को खाने पीने का रहता है आपका, तो वो अलग से रहता है, राइट? टैक्स वगैरह तो हम गिनते ही नहीं, MBHI वाला वो बाद में करेंगे। ओके या व्हाट एल्स कैन बी देयर? एनी अदर एक्सपेंडिचर्स आप लोगों के? शॉपिंग, यस अभी दिवाली आ रही है। हाँ ओके मतलब एवरेज एक साल का लगा के रखते हैं ना, एक साल में कितनी शॉपिंग करते हो आप लोग? 50,000 मिनिमम आराम से ना? यस सर। ओके अच्छा उससे कम होता है? 50,000 से कम है किसी का? कम है, कितना है? 30,000। ओके let's keep it down to an average. Well 36,000 I am keeping, so 3,000 per month it comes down to that average. Okay तो 33 हो गया है अभी पर मंथ। उसके आगे ये अच्छा ये मैं ओके वो पेंडिंग था। ओके so something around 9 to 10,000 क्या? एजुकेशनल फीस, मेडिकल इमरजेंसी बाकी है अभी, रुको सर। मोबाइल रिचार्ज इज पेंडिंग, वेट। ओके so something around the 33 we are getting, and आपका पहले क्या था? या EMI था 43 हो गया उसका, फिर कितना चाहिए और? अब तो और कोई कैटेगरी बोल रहे थे। हाँ मेडिकल इमरजेंसीज, सो समथिंग लाइक पूरे साल का 2,000 पर मंथ तो गिनना ही चाहिए, कभी ना कभी एक बार तो हमारा 800 केस हो ही जाता है।
So something that again comes down to 2000 per month. 45 हो गया. Gym, yes, gym is still pending. Okay, gym वाले अभी pending है. तो पूरे साल का अगर वो 2000 per month, something like that. That comes down to, yeah, Disha, just you can stop your video. Okay. Yeah. So something around 2000 rupees recreation. Okay. अच्छा, और पूरे साल में कहीं पे घूमने नहीं जाते हो ना, घर पे ही रहते हो 365 days. टूरिज्म एंड, हाँ, मूवी स्पेंडिंग, अभी टूरिज्म चल रहा है पहले. अच्छा, कोई नहीं जाता है ना कहीं पे. हाँ, अच्छा वो पॉपकॉर्न बाद में गिनते, लेकिन पहले टूरिज्म बता दो. 20,000 आराम से. तो 20 कम है वैसे. 20 में कहाँ जाते हो? कम है सर. वो तो बाद में काउंट करते हैं. So 2 to 3,000 तो 50 हो गया. वेट. ओके, 50,000 हो गया ये अभी तक. ये पर मंथ की एवरेज चल रही है अभी आपकी. हाँ, अच्छा लद्दाख जाके आ जाएंगे. ओके. अच्छा लद्दाख बोला वो अच्छा स्पेन नहीं बोला है. क्या देन? और अभी आप लोगों की शादी नहीं हुई है, राइट? तो वो into 2 करना बाकी है. अच्छा into 5. Okay. So I'm keeping as of now into 2. So something that comes down to around 1 lakh rupees. Okay. Medical is like families का अलग से बाकी है. I guess some educational, whatever it is remaining for you, for few of them, वो pending है. तो 1 लाख पर मंथ आपको अभी से चाहिए, है ना? वही हुआ ना? Which means 12 लाख का पैकेज चाहिए ना आपको कम से कम, so that आप 10 साल 15 साल के बाद आप रिटायर हो पाओगे, है ना? तब जाके हमारा कॉर्पस बनेगा ना. अदरवाइज उस टाइम पे फंड क्या सेविंग्स कहाँ से आओगे? अभी से डेट में हो क्या? 10 साल के बाद कुछ फंड तो लेके जाओगे ना, अगर जॉब नहीं करना है. कितने लोग वो बोल रहे थे 10 साल 15 साल खत्म कर देना है क्लास. तो पहले कम से कम मेक श्योर दैट यू आर हैविंग ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, क्लियर? तो प्लान योर कैरियर अकॉर्डिंगली. आना चाहिए. ओके, हर एक को आता है वैसे, डोंट वरी. ठीक है. सो समथिंग अराउंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी यू विल बी नीडिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. कंपाउंड करते जाना. ठीक है. तब जाके 15 साल का एक एस्टिमेट दिखाना कि अच्छा मुझे इतना पैसा तो सिर्फ मुझे सस्टेन होने के लिए चाहिए. पेंशन तो दूर की बात है, मेडिकल दूर की बात है. अगेन दैट फ्यूचर जनरेशंस एंड फ्यूचर थिंग्स आर स्टिल पेंडिंग. ओके. So definitely your overall economic life cycle is going to be like, I don't know how. Okay. So at least plan something. But ये सब चीजें अब आपके दिमाग में इसलिए आनी चाहिए because now you are financial analyst के रोल में जा रहे हो. तो हर पर्सपेक्टिव से आपको एनालाइज करना होता है सिचुएशन की कैसे काम करना. Clear? This is how you are going to understand your investment banking, your way of thinking of or rather analyzing the financial instruments, your way of deciding कि उसका रिटर्न कैसे इम्पैक्ट करेगा, फ्यूचर में मेरा प्लानिंग कैसा रहेगा, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज माय एज क्लाइंट्स का करे या ना करे, खुद का तो इन्वेस्टमेंट फंडिंग करने या प्लानिंग करना पड़ेगा ना. या अभी रियल एस्टेट को खरीदना पेंडिंग है, 4 व्हीलर पेंडिंग है, 2 व्हीलर पेंडिंग है काफी लोगों का. वो सब तो मैंने गिना नहीं अभी लिस्ट में. या लोगे कि नहीं लोगे फ्यूचर में? तो अभी करंटली प्राइस क्या चल रहा है 2 BHK का? 50 लाख. या तो आपको अगर आपको 50 लाख चाहिए तो एक साल में कम से कम कितना एवरेज, अगर मैं मुझे 5 साल में अगर या 10 साल में पकड़ लेता हूँ, चलो 10 साल में मुझे घर चाहिए, तो ऑन एन एवरेज 50 लाख डिवाइडेड बाय 10, एक साल में कितना 5 लाख चाहिए. डिवाइड 5 लाख बाय 12, 48,000 समथिंग, 40,000 समथिंग. ओके, तो वो 1 लाख में वो 40,000 और जोड़ लेना. ओके, टेंशन में आ गए. लेट्स हैव वन ब्रेक एंड वी विल कंटिन्यू. ठीक है, चलो.
नहीं हम डिस्कस करेंगे। आपको लिख के आना है, लिख के आना। We will have a break of something around 20 minutes. Huh? Yeah. 20. तो वो एक मेल आया है, वो एक देख लेना। और दैट प्लेसमेंट आपने जो बोला था, मैंने लिखा डिस्कस तो ये अच्छा मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे
she was very like ये क्या हो गया कुछ वो पैटर्न्स उनके कुछ चेंज हुए ना तो वो मुझे सुबह ही याद आया रात को उसने बोला था छोले की क्या हुआ जोर से मैंने लगा चीज क्या हुआ खत्म नहीं हुआ कि दूसरा वो मैं बाकी का नहीं लूँगा टिफिन ले लिया वहीं पे रखा था अच्छा है like compared to all the rest of us, he's good actually. यहाँ पे बैठ लेना आज मैं मतलब लेट आपको आना है ये बेसिक्स ऐसे okay do you want to cover नहीं आपको कैसा लग रहा है ये मतलब ये वेरी स्लो बहुत स्लो लगता है एक तो बैच बस पहला लेक्चर पहले 4 छुट्टी आपको ये नहीं आई विल शो यू समथिंग even I am doing this one कोई तो एक था बैंगलोर का show you it एक बार ये मेरा चैप्टर खत्म ओपन हो जाए टिकट नहीं हुआ संडे को जाते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे 2 दिन नहीं हुआ कहाँ पे नहीं ऑनलाइन मंडे को who is gone good नहीं बता पे कर जाते कैसे नहीं करना चाहिए तो सराउंडेड इसका जरूरी है
नहीं है तो अरे मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, मैं भी अच्छा खासा फॉलो करूँगा आपको। कौन सा सैटरडे है ना, पूछना पड़ेगा विषय का। आज आई भी नहीं, मैं देख रहा हूँ इसको। मैं लंच कर रहा हूँ, 1:30 बची। These are also be very intense. Anyone, like I'm just sharing हमारी कैसे। क्यों नहीं गए? रात से मुझे मोबाइल नेगेटिव आ रहा है। किसी को कुछ नहीं कर रहा है, वो कर नहीं पा रही हो शायद, है ना? नहीं हाँ? तो इसलिए मुझे भी वही लगता है। सुबह मुझे वैसे बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते थे आपके बारे में कि आपकी जितनी भी टेंशन है ना, कैसे सॉल्व होगी, कैसे करूँगा। नहीं नहीं नहीं, बट देन स्लोली स्टडीली एक पॉइंट आएगा जब ये सब सॉल्व हो जाएगा। आगे पड़ेगा ऐसे ही, और स्टॉक डीपी नहीं करता रहता, बाउंस करता है। मेरा तो कैंडल ही आ गया ऐसे स्टार्टिंग। आप जब अपना सोच रहे हो तो पहले मेरा एक बार सोचो, यू गेट मोटिवेटेड। तो अचानक से स्टॉक था ऐसे ऐसे, जब धीरे से कैंडल आई, कैंडल छूट गया, तो धीरे धीरे पॉजिटिव रहना पड़ेगा। वेरी आपको दो ही जगह की मोटिवेशन, आपका जॉब हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस और वो प्रॉब्लम्स और क्या चीज़ चीज़ कर रहा है तो उसके लिए तो जाना होगा नेक्स्ट। मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, तो मैं गेटिंग ड्रामा तो शी इज दैट, उसका मतलब है तो मेरी हेल्प क्या हो रही होगी तो कभी नहीं नॉट लाइक दैट, बट आई एम फाइटिंग। मैं आपकी तरह ही सोचने लगा हूँ, ठीक है जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा कर लो। तो मैं भी वेट एंड वॉच वाला हूँ। मुझे अभी ये भी पसंद नहीं है ना, आपका भी तो मुझे कहीं ना कहीं स्टॉप कर देना मेरे अकेले का मन नहीं। सचिन नो आई डोंट वांट टू से समथिंग, इस आ जाएगा बहुत। नहीं निकालना है।
बिकॉज मैं भी वही बोट में हूँ, मेरा भी सेम प्रॉब्लम था आपका। आप बोलोगे कि आप भी तो वही बोट में हो। वो ट्राई करना है, तो वो ट्राई कर रहा है तो वो मुझे पसंद थोड़ी आएगा। तो मैं क्या बोलूँ, हाँ ठीक है तो आ जाओ यार, तो 2 ढाई घंटे आया, ठीक है चलेगा। अचानक मैच्योरिटी का इतना जल्दा कैसे आ गया उसमें, एक दिन में ऐसा नहीं होता है। स्किल एक्सपेरिमेंट। बैठ जाओ ना कहीं। बाहर कर रहे थे। यस सर, मैंने बोला ये अलर्ट मैंने आपको। मैंने कल आपको अलर्ट कर दिया था, मैं आपको मुझे पहले चले आपको बाद में भेजते हैं। एंड दैट्स व्हाई वेरी फॉर वेरी कॉर्पोरेट कंपनीज आल्सो, हर जगह पे ऐसे ही मतलब लोग बैठे हैं। वो है ग्रैब पर क्या लगता है कॉर्पोरेट कैसा होता है, हर एक का वही है, वही ऑफिस मतलब वाला है। कोई किसी का कुछ भी बोलेगा तो पता नहीं चलेगा। मैं आपको बोला
इसमें आपका वो लेकिन ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर आप वो वीकेंड में था ना आपका तो हो गया वो पता है ओके हाँ जस्ट कौन सा अच्छा ये बैच का बोल रहे हो तो नीचे आरती मैम को बोला मटेरियल कुछ नहीं दिया नो नथिंग तो सॉफ्ट कॉपीज ही रहता है वो ग्रुप में शेयर हो जाएगा
पीछे क्या पीछे किसी के पास लास्ट डेस्क में किसी के पास मोबाइल पे 3 रिमोट थे, तीनों लेके गए। कौन? भरत लेके गया। चल रहा है मोबाइल पे क्या है? Electronics engineers can do more well. Start. Okay guys, चलो let's start. Yes sir. Okay, चलो. Okay, कहाँ पे थे आपका? अच्छा, मंथली बजट देख 1.5 लाख हो चुका है। नीचे जाके कुछ अच्छा ठीक है। So then what would be your strategies now, everyone? जॉब के साथ पैसिव इनकम होना चाहिए। ओके, लाइक कैसे, कहाँ से? स्मॉल बिजनेस जैसे छोटा सा एक टी स्टॉल डाल देते हैं। नहीं, हाँ क्या, इसलिए तो बोल रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि वो मतलब वहां पे जाते हैं, कॉफी पी के आ जाते हैं। हाँ, लेकिन स्टॉक मार्केट इतना इजीली पैसा देता नहीं है ना, दिक्कत ये है। अदरवाइज आप लोग सीपॉप भी क्यों ज्वाइन करते, राइट? अच्छा, बट बोथ आर डिफरेंट है। ये अलग है, वो अलग है। ओके,
Okay, let's continue further. So, like in our basics of financial system, normally क्या होना चाहिए सबसे पहले? Like if you want to deal into any of the type of instruments, which two entities should come first into the picture? Entities, not instruments. Entities बोल रहा हूँ. Buyer and seller. Buyer and seller. Okay, कोई buyer होना चाहिए, कोई seller होना चाहिए, right? Someone has to sell it and someone has to buy it. तब जाके तो आपका ये पूरा transaction settle down होगा. Okay, that is one. Second, you also need to understand. Say for example, to monitor or to regulate the transactions, there has to be certain entities like monitoring mechanism कुछ होना चाहिए. अगर गलती से मान लो कि आपका ट्रांजेक्शन कहीं पे गलत हो रहा है, तो से फॉर एग्जांपल सेलर के साइड से कुछ फ्रॉड हो गया या बायर के साइड फ्रॉड हो गया, तो हाउ विल ईच ऑफ देम प्रोटेक्ट themselves in such fraudulent transactions? For that, a regulatory has to be there, which is SEBI, not RBI. RBI is for banks. Okay, so SEBI is for definitely your capital markets. Okay, so in that particular case, you need to understand there is a buyer, there is a seller, there are instruments, capital markets, money markets. Okay, then there is SEBI to monitor this particular transactions, right? Okay. Further, you need to understand like how all these things are going to take place in a given particular financial system. Okay, like for example, if SEBI is regulating all these particular transactions, there has to be mechanisms at place. So which are those mechanisms? You have your National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange, NSE and BSE. Okay. Other than this, there is a third type of market, which is known as your OTC markets, which is over the counter. What is over the counter? It is a market wherein directly हम लोग एक दूसरे के साथ directly deal कर रहे हैं, face to face, or in meetings, or through emails, or through communications. Okay, but we are not carrying out our transactions on any exchange. Exchange पे नहीं करते हैं, ऐसे internally करते हैं. Okay, so have you heard of any डब्बा system? Or not that Mumbai वाला? वो नहीं, not that tiffin services. Any या डब्बा सिस्टम सुना है? हाँ बोलो. हाँ correct, yeah, correct. And it is still existing today. Okay, yeah, so basically it is nothing but at some point you need to understand कि उसमें exactly होता कैसे है. अब जैसे मान लो कि अच्छा, वो स्कैम कितने लोगों ने देखा है? स्कैम सीरीज 92. ओके, तो वो वहां पे जो एक जब वो रिंग में जाते थे, जॉबर्स जिसको बोलते थे, तो दे यूज्ड टू राइट इट डाउन इन डायरीज, राइट? ओके, अब डायरीज में लिख के दे आर कैरिंग आउट ऑल दोस ट्रांजैक्शंस. ओके, तो सिमिलरली इन द डब्बा सिस्टम का क्या होता है कि मतलब एक ब्रोकर ही ये सब मैनेज करता है बायर्स और सेलर्स को. नाउ से फॉर एग्जांपल इफ वन ऑफ यू इज कमिंग ओवर देयर एंड सेइंग कि मुझे रिलायंस खरीदना है 1000 क्वांटिटीज, अभी चल रहा है 2500 से फॉर एग्जांपल. ओके, आपको रियल कैश नहीं देना है. दैट 2500 into 1000 कितना हो जाएगा वरना? 25 lakhs. ओके, तो 25 लाख रुपए लेकर नहीं आना है आपको. यू कीप इट विथ यू. तो आपका एंट्री जाता है वो डायरी सिस्टम में दैट यू आर बाइंग 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस एट अ प्राइस ऑफ 2500. अब उसका प्राइस चला गया 2520 पे, तो एक दूसरा वहीं पे कहीं पे आप में से कोई होगा, अच्छा बोल रहे कि मुझे भी खरीदना है 1000 क्वांटिटीज. But that previous buyer, he will say, I want to sell it. Okay, those 1000 quantities. बाकी जो दूसरा जो buyer है, वो बोलेगा ठीक है मैं ले लेता हूँ, but at a price of 2520. So that 20 rupees difference into 1000 quantities, 20,000 rupees आपका straight away profit रहता है. After brokerage जो भी होगा वो देखेंगे, but पहले आपका 20,000 का profit हो गया. In that case, that is one. Second, वो जो दूसरा जो buyer है, वो भी ऐसे ही खरीदेगा, वो 2540 पे बेचेगा, कोई फिर 2600 तक जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा. So someone either is going to make profit, someone is going to make a loss. So at the end of trading day, वो डायरी में इतना ही लिख कर आता है कि आपका कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है. जो भी प्रॉफिट होगा वो ब्रोकर देगा आपको, और जितना लॉस होगा वो आप देगा ब्रोकर को. And broker, whosoever is arranging all these things, he will be earning commissions or the brokerages from those transactions. This is how that indirect channel of that stock market is working, and it is illegal in India. And henceforth, you will even find that raids will be taking place at all these brokers' offices.
ओके तो ये चलता रहता है. तो इसलिए this is one of the reasons that cryptos are being raided frequently, or crypto exchanges, or whosoever it is being done. Second thing, I hope everyone is aware of crypto. Yes. Cryptocurrencies, yeah. Okay. So in that case also, RBI has not given an official permission or that particular authority that cryptos will be considered as a medium of digital exchange or whatever exchange for monetary terms. वो सबको पता है. But they have put forward that whatever profits you are going to earn, on that 30% flat income tax is going to happen, which means अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं from that particular transaction, 30% of 1 lakh is equal to 30,000 rupees. So that 30,000 rupees has to be paid as net tax by you to the IT department. तो अगर पैसा वापस आता भी है प्रॉफिट में, तो 30% आपका उसमें से टैक्स चला जाएगा, irrespective of whatever you have earned. And that's why you should avoid crypto. We have invested 1 lakh or currency loss में चला गया, 70,000 we are gaining from that. Like हमने 1 lakh invest किया तो 70,000 आ रहा है. आपको 70,000 की भी 30% टैक्स as per RBI. मतलब आप प्रॉफिट बनाओ या लॉस बनाओ, आपको 30% टैक्स देना है. Okay, but so that is why they are actually discouraging the transactions of cryptocurrencies. Okay, they are not actually encouraging. Why? Any reasons for that? Why not safe? Fluctuations are there. Then, other than that, laundering can't be regulated. Okay, then money laundering. Money laundering. Okay, that is one of the major reasons. Then Sir, no record. No records. Okay. Okay. So say for example, we already know that in the case of the cryptocurrencies, definitely एक चीज इतना पता है कि directly मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में जा रहा है. Okay. Otherwise जनरली क्या होता है कि पैसा जो डीमेट अकाउंट का है नॉर्मली अपना कैपिटल मार्केट्स का, वो बैंक में आता है. तो बैंक इज अ थर्ड पार्टी, राइट? आई एम बायर, समवन इज सेलर, एंड बैंक इज द थर्ड पार्टी who is getting involved, which means that my all the directly from one person to another, किसने भेजा, कहां से आया, कैसे भेजा, no one knows that. Clear? Okay. Besides that, there is one more thing. Since there are no records maintained, the government cannot identify कि कौन से source से आया है. Say for example, if from Saudi it goes into Jammu and Kashmir, then what will happen? Yeah, so money laundering and terrorism funding happens in this way. Otherwise, तो वो कैसे आएगा? So that is one of the major reasons that cryptocurrencies are not going to be allowed by RBI in the near time, unless and until RBI comes up with some picture. RBI ने जो stand लिया है कि हम खुद का अपना coin launch करेंगे, that is fine. But why? Because at least they will be able to track all the transactions which will be happening. Otherwise, it is difficult for any single entity to monitor so many transactions. कोई भी दुनिया के मतलब वो कोने से भेज सकता है ना आपको. It is very easy. Okay, someone sitting in New Zealand can send it to Spain. Some Spain is sitting somewhere else and he is going to send it somewhere else. Okay, हो सकता है ना possible. So to avoid all these particular fraudulent transactions, one second problem कहाँ पे आया? Normally ये तो क्रिप्टो चल ही रहा था, डब्बा सिस्टम जो घुसा वहां पे उन्होंने और फ्रॉड कर दिया. Okay, now you can relate this double system into that crypto transactions or crypto news that you might be listening. ये fraud हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कहीं ना कहीं न्यूज़ में तो पड़ा ही होगा. So that is one of the major challenges that needs to be tackled down. Okay, since there is no particular permission officially being granted, it is important for the government of India also to monitor all these things at some point. Okay, buyer आ गए, seller आ गए. Okay, then you have SEBI. Who else can be there as a participant? In the financial system, depositories. Okay, then investors is a buyer, ठीक है, और borrowers वही buyer seller हो गया दोनों. Then clearing house, yes. Then depositories second. Then custodians, जैसा कुछ सुना है? Custodian, that is third one. Then और उसके अलावा regulatory authorities, any other. Okay,
नाउ वन बाय वन वी विल सी कि ये हर एक का रोल क्या है. ओके अच्छा, कितने लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कभी कभी करते हो? ओके ठीक है. ओके सी, कैन यू name any depositories of India? CDSL and NSDL. There are two major regulatory authorities operating in India. Okay, depository क्या करती है? See, the role of the depository is to ensure, first of all, the streamlining of all the operations. One, second, जो भी transactions हुआ है उसका record आपको भेजना होता है. अच्छा, आपने ये security लिया था, आपने ये security बेचा था, आपने ये security को वापस आपने लिया था, ये security को वापस बेचा था. ये जो पूरा record है ना, वो automatically कहीं ना कहीं से आ जाता है. Okay. In that particular case, you need to understand like what exactly this particular depository has to do. Why? Because आपको एक statement मिलना चाहिए ना of all the transactions that you have done. तो आप cross tally कर पाओगे ना last में कि अच्छा मैंने इस तारीख को ये transaction किया था, इस तारीख को ये किया था, ये किया था. अगर एक आध एंट्री आगे पीछे हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर नीचे हो गया, then difficult for you. Henceforth, depositories are being permitted to ensure that there is a streamlining of business operations in all the transactions whichever are taking place. आप म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्ट करो, आप कोई इक्विटीज को ले लो या फिर आप बॉन्ड्स को ले लो, ऑन द लाइव एक्सचेंजेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरीवेयर डिपॉजिटरी हैज टू बी देयर. ओके, हु इज अ कस्टोडियन? कस्टोडियन ऐसा होता है कि जो सेफगार्ड करता है आपके फाइनेंशियल एसेट्स. ओके, तो जब तक वो सिक्योरिटी से, फॉर एग्जांपल मेरे डीमैट अकाउंट में, व्हाट इज डीमैट अकाउंट? द अकाउंट व्हिच यू विल रिक्वायर टू ऑपरेट इनटू फॉर कैपिटल मार्केट्स एंड मनी मार्केट्स. या अगेन इट इज बीइंग लिंक्ड विथ योर बैंक अकाउंट. ओके, तो बैंक से पहले ट्रांसफर करना पड़ता है पैसा डीमैट में, तब जाके आप डीमैट में शायद कुछ बाइंग या सेलिंग कर पाएगो. आफ्टर दैट आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओके दिस इज हाउ दिस इज ऑपरेटिंग. ओके, so depository, that is one, it is being done. Second, you need to identify what exactly custodian is doing. Custodian क्या करेगा? अगर मैं बायर हूं तो मेरा कोई कस्टोडियन है, आप सेलर हो तो आपका कोई कस्टोडियन है. उसके पास, हम दोनों के पास, मतलब हमारे जितनी भी सिक्योरिटीज है वो उसके पास रहती है. ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल इफ टुमारो आई एम सेलिंग दैट 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस, तो मेरे डीमैट अकाउंट में से वो 0 हो जाना चाहिए और जो खरीदने वाला है उसके पास वो 1000 पहुंच जाने चाहिए. बट अगेन on a normal transaction basis, the buyer of that particular security, he needs to pay me that 25 lakh rupees in exchange of 1000 shares. Okay, only then that transaction will be completed. One, and second, custodian will be able to exchange the securities as well as the net settlement amount. Clear? Any doubt till now? Okay. No, sir. Yeah. ठीक है, depositories are done, then custodians are done. अच्छा, can an investment bank be a custodian? Can an investment bank be a custodian? Sir, it can be appointed if someone wants, like, sir, the mutual funds who deal with large amount of shares for their daily transactions. Okay. Okay, so JP Morgan is of course the largest custodian bank among all the investment banking companies. Okay, rest others, definitely BNY Mellon is there. Okay, then Morgan Stanley is also there working as a custodian. Okay, then I think a few others are also there, like few of the investment banking companies which are working as a custodian. Why? Because वो clients के इतने सारे assets, इतने सारे multiple instruments they are dealing with, वो सबको safeguard करना पड़ेगा ना. कल आपको अगर से फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपीस वो आप दे दे तो दैट इज फाइन, लेकिन उसके सामने आपको 1000 शेयर्स क्रेडिट भी तो होने चाहिए. तो यू विल बी एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर सच पर्टिकुलर like entity who is going to settle their transaction. Hence custodians come into the picture. Okay, and all the operational processes like settling of amount or crediting the shares, ये जो भी processes होती है that is being done by CCI, which is nothing but your Clearing Corporation of India. Okay, so Clearing Corporation manages all these particular transactions. That is one. They will be actually clearing. Clearing क्या होता है कि यहाँ से मैंने भेजा, वापस उसके अगेंस्ट में मैंने 25 लाख रुपए रिसीव किया, एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया, उस टाइप की बात है. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस? बैंक्स के बारे में कुछ भी बताओ. ओके, क्लियरिंग हाउस जैसा कुछ सुना है? क्लियरिंग हाउस, व्हाट इज क्लियरिंग हाउस?
What is a clearing house? Any idea? No idea? Okay. See, पहले actually system कैसा था before like the advent of all these technologies? Like say for example, एक जगह पे clearing house होता है, which is again nothing but the largest bank of that area, geographical area. अब अगर एक पुणे जैसा city है, तो definitely we have to bifurcate the clearing houses. मतलब say for example शिवाजी नगर है, तो वहाँ पे कोई एक bank will be working as a clearing house. If you go to some another area like Hinjewadi or something else which is far again, then definitely you will have some another particular bank which will be acting as your clearing house. वहाँ पे क्या होता है, हर एक बैंक जो होती है, तो हर एक बैंक में अलग अलग चेक्स आते होंगे. ऐसा तो नहीं है कि एसबीआई है तो एसबीआई में हर एक एसबीआई का ही चेक आता होगा. एसबीआई में एचडीएफसी माइट कम, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऑल दिस बैंक्स के चेक्स आते होंगे. उसको सेटल कैसे करना पड़ता है? तो व्हाट एंड ऑल दिस बैंक्स विल बी डूइंग, one single nominated person from that respective bank, he will be collecting all the checks and he will be going to the clearing house. अब clearing house कैसा होता है, ये मान लो ये जैसा हॉल है ना, उतना ही हॉल होगा और पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरफ बैठे होंगे सब, like every one representative from all the banks, say for example SBI, HDFC Bank और ICICI और Axis और all these things. Okay, ये जितने भी बैंक्स है उसका हर एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठा है. say for example I am SBI, अब मेरे पास 10 checks are there from HDFC Bank, 10 checks are there for ICICI, 20 checks are there for Axis. ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चेक्स होंगे. तो मैं क्या करता हूँ, से फॉर एग्जांपल सामने बैठा है ICICI बैंक, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये भाई आपके 10 चेक्स हैं, देख लो कि टोटल कितना हो रहा है. अब 10 चेक का जो टोटल है ना 10 लाख रुपीज आ रहा है, से फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, ICICI बोलता है कि मेरे भी 5 चेक्स है SBI के, ये मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन उसका अमाउंट जो टोटल हो रहा है वो 7 लाख रुपए है. तो व्हाट वी टुगेदर विल बी डूइंग इज, चेक्स को तो एक्सचेंज कर दिया, अमाउंट को कैसे एक्सचेंज करेंगे? ही विल बी पेइंग मी 3 लाख रुपीज विच इज दैट नेट डिफरेंस. वो ऐसा नहीं करेगा कि अच्छा मैं उसको पहले 10 लाख दे रहा हूँ, वो 5 लाख देगा, 7 लाख देगा और 3 लाख का नेट डिफरेंस सेटल करना. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दैट वे. दिस इज दैट पर्टिकुलर बेसिक फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग हाउस. क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? ओके. तो क्लियरिंग हाउस बेसिकली सिमिलरली इवन इन योर कैपिटल मार्केट्स क्या करता है, हर एक जगह से इंस्ट्रूमेंट की इक्विटीज आती होंगी. ओके, नाउ एज एन इन्वेस्टर इट्स I might be investing, say for example into not only in Indian stock market but also into London stock market, into Frankfurt or any other like Dow Jones or any other like multiple stock markets across the world. तो हर एक जगह से मेरा वो बैलेंस करना, मैनेज करना फंड्स को एंड देन सेटल करना चैलेंजिंग है ना. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी. ओके, राइट डाउन वन असाइनमेंट ओवर देयर. Identify 5 stock exchanges across the world along with the names. Five stock exchanges across the world. Sir, please can you repeat? Identify 5 stock exchanges across the world. ओके, तो 5 स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या हुआ? तो से फॉर एग्जांपल इट्स मोर और लेस लाइक, से फॉर एग्जांपल यूएस की स्टॉक मार्केट कौन सी है? 1. सेकंड यूके की कौन सी है? सेकंड. थर्ड ऑस्ट्रेलिया. फोर्थ सिंगापुर. फिफ्थ यू कैन पिक एनी, फ्रांस, जर्मनी, एनीवन. ठीक है, यूएस की कौन सी है? और Nasdaq and Dow Jones. Nasdaq. No, S&P 500 is the index. Nasdaq है. Dow Jones. हाँ वही डाउ जोन्स.
ओके, सो जनरली क्या होता है, डाउ जोन्स में जो शाम को होता है ना वहां पे, वो इंडिया की बाजार में सुबह रिफ्लेक्ट होता है, irrespective of we both are not correlated, right? Why? Because what exactly happens is, like, the global or the central main transactions by volume, or by, say for example, even by the size of that particular transactions, the largest is the Dow Jones. Okay, then you have the London Stock Exchange, then you have rest of the markets, and that's how our capital markets are directly or indirectly affected by their performance. न्यूज पहले वहां पे आती है, शाम को वहां पे मार्केट गिराते हैं, दूसरे दिन हमारा मार्केट भी गिरा के जाते हैं. ओके, irrespective of our Indian stock exchanges will be in good positions. ओके, सो ये लोग, ये जो होता है ना कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आजकल के ये टाइम में कुछ भी नहीं होता है. क्लियर? या सो इतना ट्रेडिंग करना आसान नहीं है. ओके, कोई पोजीशंस लेके जा रहे हो, आज रात को पता चला कि डाउ जोन्स से गिर गया पूरा, सुबह पता चला पोर्टफोलियो साफ हो गया. ओके, so it can happen, and with options and the futures coming into the picture, definitely derivatives में तो हो ही जाता है. Yeah? Okay, so then this is how all these things are working. Okay, so first chapter is your introduction to FS, second is your definitely capital markets, third is your money markets, fourth is your fixed income securities. फिक्स इनकम में मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम देखेंगे जहाँ पे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज मिलती है. ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ आर मोर और लेस लाइक कंबाइंड डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस आर देयर, एंड लास्ट टॉपिक इज योर स्वैप एग्रीमेंट्स. सो दिस मेक्स योर एंटायर लेवल 1. ओके, जितना अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करोगे लेवल 1 को, तो मोर यू आर गोइंग टू बी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्क्रीट इनटू दिस. इट विल बी मच मोर बेटर एंड बेनिफिशियल फॉर यू इन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज. ओके, अभी के लिए इतना ही बोल सकता हूँ. ओके, एंड लाइक बाय सितंबर एंडिंग we will try to finish your level 1 and also start something of your level 2. Level 2 is more into your operational processes, more into theoretical portions, no live markets, no nothing. ठीक है, बोर हो जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा लेवल 2 क्या है, ज्यादातर इतना बड़ा टॉपिक है. ठीक है, बट दैट इज हाउ इट इज. ओके, और लेवल 3 छोटा टॉपिक है, मतलब 2 ही टॉपिक्स है वहां पे, and then you will be completing with your CBOP. So probably I guess in the month of September, October, and probably in the November, CBOP 15 will be over. Okay, तब आप जा चुके होंगे प्लेसमेंट्स के लिए. Okay, आपके पास टाइम नहीं है बहुत. Okay, start working from day 1, start preparing for all these assignments. तब जाके कुछ बेस बनेगा, एक ही दिन में अचानक से नहीं आ जाएगा. Okay, you have to work very hard. Competition यहाँ पे ही है, बाहर का तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. Right? Like say for example 20 positions as of now are required for Morgan Stanley or I think Northern Trust. तो यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है? 45 प्लस आराम से. तो 45 में से मुझे अगर किसी 20 को सिलेक्ट करना हो तो why should I hire you? Yeah. वो बोलोगे तो फिर वही होगा, तो फिर बोल देंगे why should I not hire you? ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, आप लोगों को एक्सेस मिल गया है पोर्टल का? कब तक मिलेगा, कुछ बोला है? अच्छा, नीचे जाओ तो सब एक साथ पूछ के जाना. ठीक है, सब एक साथ घुस ही जाओ अंदर. ठीक है, चलेगा. ओके, दैट इज वन. एंड सेकेंड, आई विल बी शेयरिंग द फर्स्ट PDF ऑफ लेवल 1 इन द ग्रुप. मतलब आपका व्हाट्सएप ग्रुप में सब हो ना? आप पेंडिंग हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा. नो सर. हाँ, तो whosoever is pending, please ask Aarti ma'am to add you. Okay. Okay. अच्छा, आगे हाँ वहाँ पे भी दिया गया है, अगर नहीं है तो I will be again sharing in the group. अच्छा, one more practice you have to do. LinkedIn में आप वो लिखने वाले हो, that is fine. वो पोस्ट का जो मैंने बोला था, but again share the link of that article into our WhatsApp groups on a regular basis, so that बाकी सब लोगों को benefit हो.
ठीक है. So every day I am expecting one news article from everyone. So 45 news articles has to be there every day. Flood करना है ग्रुप को, but वो मत करना कि top 10 stocks to buy, top 2 stocks to buy, Nifty is going to be like this, Sensex is going this way. No, आपको वैसे भी stocks के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो don't do that. Okay, जो समझ में नहीं आ रहा है वो शेयर कर रहे हो तो वो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा. वो आपके ऊपर है, आपको कितना टाइम मिलता है. हाँ, यू कैन राइट एनीथिंग, दैट इज फाइन. वो धीरे धीरे स्टार्ट करोगे आप 30 लाइंस पे, लास्ट पे आप अटक जाओगे 3 लाइंस पे. अभी स्टार्टिंग में वो जोश में आके वो एंथुसियाज्म अच्छा होता है, बट देन एट द एंड ऑफ डे इट गोज डाउन बिलो. ठीक है. So that is one thing, but yes, start something with at least 10 articles, 15 articles. इतना भी लिख पाते हो, that is more than enough. मतलब as of now, I am expecting only this much as an average. Ideally होना चाहिए आपका 60 plus, but I am expecting around 15 only. 1/4 ही expect कर रहा हूँ. ठीक है. Let's see कि आप लोग कितने 60 articles का target achieve कर पाते हो. ठीक है. जो achieve कर गया उसको T1 अभी से, है ना? Whole duration का. मैं मना नहीं कर रहा हूँ. हाँ. But how exactly, like what was supposed to write, like the news? कोई भी आर्टिकल आप जो पढ़ रहे हो उसकी समरी लिख दो ना. हाँ, शेयर इट. हाँ, और फिर हैशटैग में डाल दो ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हैशटैग दिस, हैशटैग दैट, हैशटैग वो सब करके डाल दो हर एक जगह. हाँ हाँ. मुझे भी ट्रेंड कर दो. हाँ हाँ, मुझे भी ट्रेंड कर दो. ठीक है. हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे सिवॉप मिल जाएंगे आपको. ठीक है. हाँ, तो नहीं, बट अदरवाइज ऑल्सो बाय जैसे आपका लेवल 1 ये खत्म हो गया ना, से फॉर एग्जांपल वी आर कंप्लीटिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, तो राइट डाउन दैट समरी आल्सो. व्हाई? बिकॉज वो रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा आपको. ओके. सिमिलरली फॉर लेवल 2, सॉरी टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, एक एक समरी ऐसे ही लिख दो. आई थिंक दैट इज मोर और लेस इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर टर्म. कभी भी इंटरव्यूज भी आ गया तो रिवीजन आपको सिर्फ लिंक्डइन के पोस्ट ही पढ़ने हैं ना. आपको पूरा लेवल 1 का पीडीएफ उठाने जाओगे वापस, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इट. ओके. सो दैट इज वन थिंग. फर्दर आपको क्या करना है? ओके. Okay, let me show you one calculation and then we will end this today's introduction class. ठीक है. Let me see if I have that. सबमिट कैसे करना है? तो आपने भी वो आपको लिख के आना है हर रोज. जो भी असाइनमेंट्स है वो आप अपनी बुक में ही लिख के आओ. We will discuss to like in the next session. In the first like one hour we will be discussing all these things. तो वो current affairs भी थोड़ा बहुत ब्रश अप होता जाएगा रोज. Okay, let me show you something. अच्छा, आप लोगों के पास कैलसी है ना? सबके पास मोबाइल तो है क्या? राइट. आपको एक कैलकुलेशंस करना है. लेट मी शो यू दैट. ओके, इज इट विजिबल? प्राइस दिख रही है नीचे डेट से. लेट मी जस्ट ओके. नीचे डेट दिख रही है सबको? दिस पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे डेट से यहाँ पे प्राइस है. राइट. Everyone is able. This is one stock, KACL, Kaiser Corporation Limited करके. Online students able to view this? Yes, sir. Yes, okay. sir. Yes, sir. Okay. Now, what is the date over here? If I'm pointing out my mouse somewhere here,
28 June 21. मतलब ऑलमोस्ट लाइक एक साल और 2-3 महीने पहले की बात है. ओके ओके राइट. The share price of KACL was 0.50, मतलब 50 पैसा. The share price of KACL was 50 पैसा. Okay. Now you have an investment amount of 1 lakh rupees. So how many number of shares can I get? Okay, 50 पैसा आपका एक शेयर का प्राइस है. Take an assumption of an investment amount of 1 lakh rupees. How many shares can I purchase into that? 50 पैसे का एक शेयर आता है, तो 1 लाख में कितने आ रहे हैं? 2 lakh shares. कैलकुलेट करो ना. 2 lakh shares. 2 lakh. तो देख लो कितना आ रहा है. हाँ, अच्छा लिखा आपने. ओके नाउ हाँ, एनी क्वेरीज? एक सेकंड पीछे. डन. ओके नाउ वी आर गोइंग इनटू द जर्नी ऑफ द स्टॉक. ओके June 21 डेट लिख लो कहीं पे. ओके just a minute. Okay, mute your mic. Akash, mute your mic. Okay, now यहाँ पे डेट कौन सी दिख रही है आपको? If I'm pointing out over here, 14th March. Okay, somewhere here it is 14th March, right? And the price at that time was 132 rupees, right? अच्छा तो एक साल हुआ. Okay, 132 rupees है. Now calculate कि कितना हुआ फिर. आपको कितने number of shares आए थे? Okay, now count it. 64 lakhs. The share price was 132 in April 2022. 2 crore 64 lakhs. 64 lakhs. आ गया आंसर? क्या आ रहा है? Sir, 2 crore 64 lakhs. Okay. 132 into 2 lakhs. कितना आ रहा है आपको? 2 करोड़. हाँ, 2 crore 64 lakhs आ रहा है. ओके तो 2.5 करोड़ के ऊपर चला गया ना ये तो. एक साल भी नहीं हुआ है ना शायद. June 21 से April 22, राइट? So which means your 1 CBOP is equal to this. Yeah. या हुआ है वैसे ना, मतलब मैं तो वो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना उसमें. पैसा किसी का अगर बन गया 1 लाख डाल के तो बन गया है उसमें. So if you had invested 1 lakh rupees in June 21, okay, you could have received around 2.64 CR in March or April 22. आपके जो पेंशन फंड वाले जो प्रॉब्लम्स थे तो वो शायद सॉल्व हो जाते, है ना?
नो साइड पैसिव इनकम, फिर कुछ नहीं चाहिए था, 1 साल में रिटायरमेंट आ जाता हमारा शायद. So this is that particular concept that you need to understand. This is how the capital markets operate. Okay. So your homework will be identify 3 stocks. Identify 3 stocks whose capital appreciation is more than 1000%. Appreciation is more than 1000%. Now, what is the formula to calculate capital appreciation? Selling price minus buying price divided by buying price into 100. Selling price minus buying price divided by, that entire answer has to be divided by buying price. So say for example, यहाँ पे 132 minus 0.50 divided by 0.50. करो कितना आ रहा है? Equation. Selling price minus buying price divided by buying price. हाँ, buying price 0.50, उसको पूरा डिवाइड कर दो 0.50 से. हाँ पहले मैं 245 into 100 करना है. $24,500. कितना आ रहा है? 26,000 परसेंटेज, राइट? परसेंटेज. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि if you had invested 1 rupees, 1 rupee का सिक्का into this stock at 0.50, it could have given a return of 26,300 rupees. अब समझ में आया कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है? Okay. Even your that PVR popcorn could have resulted something into like your something else. 500 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते हैं तो भी आपको कहां से कहां तक लेके जाते. 1 रुपया आपको 26,000 रुपए दे रहा है, तो 500 रुपए must have been like something like 26,000 into 500. I think it will be nearly like more than 20 lakh rupees. Yes. अभी बाइंग है ना, बाइंग चल रही है. ये बाइंग है नहीं, बाइंग था. ये हर रोज अपर सर्किट मार रहा था. Every day it started its journey into that upper circuit. That's how it went. See, constantly ऊपर ही चला गया वहां से. Sir, same is happening with Imagica. Imagica. Okay. Sir. I haven't tracked. तो आपको मैंने जो असाइनमेंट दिया है वो क्या दिया है कि आइडेंटिफाई 3 स्टॉक्स फॉर होम कैपिटल एप्रिसिएशन इज ग्रेटर देन 1000%. ठीक है, सिर्फ 1000 बोलेंगे तो 26,000% आ गया ना. उसकी जगह आपको सिर्फ 1000% ही आपको करना है. क्लियर? एनी डाउट्स इन कैपिटल एप्रिसिएशन? फॉर्मूला लिख लिया सब लोगों ने? ओके. सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस डिवाइडेड बाय बाइंग प्राइस या इनटू 100. परसेंटेज में लेना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा. ओके, डोंट फॉरगेट दैट, वरना फिर वो सिर्फ 260 ही आएगा आंसर आपको. काफी लोगों को आ गया होगा लेकिन बोला नहीं है. Done? Okay. Okay. Further. Okay. Listen. चलो शांत हो जाओ. शांत हो जाओ, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे. आ गया समझ में? नहीं आया आप लोगों को? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? कैसे किया बताओ? कैसे किया कैपिटल एप्रिशिएट?
तो सेलिंग प्राइस क्या है? हाँ, और बाइंग प्राइस क्या है? 50.50. ठीक है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. बाद में वो बिजनेस प्लान्स वी कैन डिस्कस लेटर. ओके, चल. ओके, so like this, definitely capital markets is going to award you or reward you like anything, but definitely we need to identify such stocks which can give you such amount of returns. As of now, no large cap or mid cap stocks can give you. We need to identify another set of stocks which can definitely provide such amount of returns. Okay, आज आप जाके मतलब असाइनमेंट करोगे तब आपको पता चल जाएगा. कितने क्वेश्चंस हुए? 9 ही हुए. Okay, target is 20. Let's see. चलो. हाँ? नहीं. हाँ, okay. चलो, let's continue further. Okay. एक असाइनमेंट और आपको करके आना है. ठीक है, लिखो. Then identify the current FD rates. Identify the current FD rates of any 3 banks. Okay. Identify the current FD rates of any 3 banks. FD, fixed deposit rates of any 3 banks. एक private sector, एक public sector is a must. Okay. फर्स्ट सेशन है आज. या 48. 14 are there as of now. Yeah, she's Akshata. I hope आपका हुआ, इनके साथ नहीं हुआ है ना? अच्छा, आफ्टर द लाइक हमारा जैसे खत्म होगा, she will be the first point of contact for you guys. She is the placement coordinator over here. Okay, everything will be coming. हाँ, जो भी है ना वो वहीं पे आएगा. आपका होगा इंटरवेंशन सेशंस. There will be like how to like all these things, registration कैसे करना है, ये सब कैसे करना है, all these things will be coming. Okay. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Energy आ गई ना? Okay. So some more energy अभी आ गई वापस, तो कंटिन्यू करते हैं ना. प्लेसमेंट का नाम सुन के तो सबको ही आ जाता है. Okay, let's continue. अच्छा, अभी आपको FD rates का बोला, उसके बाद identify the interest rates of the following countries. Identify the interest rates of the following countries. Identify the interest rates of the following countries. सबसे पहले US, UK, India, Russia, Australia, France, South Africa, Canada, और जर्मनी. Germany last. Now, what are these interest rates? Interest rates are nothing but whenever the government itself launches any security. अब ऐसी कौन-कौन सी securities हो सकती है? Can anyone tell me? Bonds. Yeah, government bonds are there. Then shares. Sovereign gold bond ना? हाँ, तो वो sovereign bonds आ गया. Then any other?
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई कुछ सुना हो तो टी बिल्स, आपने ट्रेजरी बिल्स सुने? हाँ, तो ट्रेजरी बिल्स, देन योर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, योर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स आर आल्सो समटाइम्स बीइंग इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जितने भी है ना उसके कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं। ओके, व्हाई दे आर बीइंग इशूड? बिकॉज आरबीआई नीड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, RBI also needs to manage the flow of money into the Indian market. RBI also needs to make sure that there is a balance between capital market and money market. ऐसा नहीं होगा कि हर बार कैपिटल मार्केट को बुलिश फेज में देखोगे, राइट? अगर ऐसा होता तो आज निफ्टी 20,000 25,000 तक चला गया होता। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन दैट वे। ओके, वो नीचे आता है, जब वो नीचे आता है तब मनी मार्केट ऊपर जाता है। एंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, दे डायरेक्टली इन्वेस्ट एंड चैनलाइज इनटू मनी मार्केट। क्यों? मनी मार्केट में कभी भी पैसा आपका डूबता नहीं है। हैव यू एवर हर्ड कि आपका एफडी का पैसा डूब गया? एफडी पूरी डूब गई। ओके, बैंक ने मना कर दिया कि नहीं मत आओ अभी यहाँ पे। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? ओके, सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर सेफ एंड सिक्योर। ओके, योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जो भी होगा तो वो एफडी के फॉर्म में ज्यादा होगा, लाइक सच फिक्स इनकम्स। ओके, दे विल नॉट बी लाइक इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट्स। वो हम लोग हैं, या ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट्स आपको हर एक कंट्री का आइडेंटिफाई करने के ऑन एन एवरेज कितना रहता है। देन वी विल डिस्कस, एक ऐसे ही कहीं पे कंसेप्ट लिख दो, इन्फ्लेशन वर्सेस इंटरेस्ट रेट्स वर्सेस क्रूड ऑयल, इन्फ्लेशन वर्सेस इंटरेस्ट रेट्स, क्रूड oil versus capital markets versus recession. Sir, once again. Inflation versus interest rates versus crude oil versus capital markets versus recession. ठीक है, पांचों का हमको ये कोरिलेशन समझना है। ओके, बट दैट वी विल अंडरस्टैंड वंस वी रन थ्रू कैपिटल मार्केट्स एंड वंस वी रन थ्रू दैट इन्फ्लेशन वाला टॉपिक। नो, इट्स नॉट एन असाइनमेंट, बट हाँ इसके बारे में करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। ओके, सो हाउ इन्फ्लेशन इज अफेक्टिंग क्रूड ऑयल, और हाउ क्रूड ऑयल इज अफेक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स, और हाउ क्रूड ऑयल इज अफेक्टिंग कैपिटल मार्केट्स, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? Any doubts so far? Okay, any changes that you want in this pedagogy? So the which we got the PDF, that is the only thing which we should refer. I will be sharing my PPTs also, but हाँ, don't restrict yourself now. Okay, अब ऐसा मान के मत चलो कि वो PDF में से आपका इंटरव्यू होने वाला है। It's not going to happen. आपको एक्स्ट्रा रीडिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ दैट यू नीड टू रीड एक्स्ट्रा थिंग्स आल्सो फॉर योर करंट अफेयर्स टू लिंक द कंसेप्ट विद द एग्जांपल्स। आई थिंक जिन लोगों ने वो बैच लॉन्च सेशन अटेंड किया था, आई एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ IBC स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ओके, सो इंट्रोडक्शन यू हैव टू डिफाइन द कंसेप्ट, बॉडी में आपको एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन देना है, एंड कंक्लूड इट। दिस इज हाउ व्हाट योर स्ट्रक्चर हैज टू बी इन द फाइनल इंटरव्यूज। ओके, तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, वन थिंग। सेकंड, मेक अ ग्रुप्स ऑफ लाइक समथिंग अराउंड 3 to 4 मेंबर्स। ओके, व्हाई? बिकॉज लाइक आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत काम करना है। ओके, कुछ लोगों को, जैसे मैंने आज वो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया, तो आफ्टर दैट आई हैव अंडरस्टूड कि कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ही नहीं है। ओके, सो डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। कंसेप्ट पता है, डोमेन नॉलेज है, लेकिन इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाओगे, देन how that thing is going to help you. Yeah, so make sure that you divide yourselves. हाँ, ज्यादा 7-8 लोगों का ग्रुप मत बनाना, फिर वो पिकनिक ग्रुप हो जाता है। Okay, so don't do that. Okay, any doubts, any other things that you want to add on, or any queries? Any queries so far in this session? Okay.
What should be the approach of studies on daily basis? Start with 3 to 4 hours. Okay, धीरे धीरे start करो, फिर 6 to 8 hours के मोड पे लेके जाओ. So daily newspaper also, like daily tasks. Like daily tasks with this concern. 3 to 4 hours धीरे धीरे start करो. अचानक से 8 hours वाले schedule में jump करोगे तो difficult है. Don't do that. So observing market also, reading newspapers. Yes, ये सब करना है, ये सब करना है. Okay. So let's keep today's session up to this. Okay, we will move slowly. अपने assignments आपको जितने भी दिए हर एक को करके आना है. जो लोग कर submit नहीं करना है. We will discuss in the class. Okay. We will be discussing each and every like aspect of all these things. थोड़ा base concept clear करो, थोड़ा markets को देख के आओ. Start watching Sensex, Nifty and Bank Nifty. हाँ, वो एक लिख लो कहीं पे. At least you have to watch these 3 levels, like levels of these 3 indexes daily. Okay. Nifty, Bank Nifty and Sensex. ये 3 चीजों को हर रोज अभी आपको ट्रैक करना है. Anytime I am asking what is currently Nifty trading at, तो आपको बताना है. What is currently Bank Nifty trading at, तो आपको बताना है. ठीक है. Bank Nifty and Sensex. ये 3 चीजों को आपको देखना है. Done? Okay. Any changes that you want? अभी तो ऐसे मुझे भी नहीं पता चलेगा, but like anything that you want to add, like in the explanation part, like how should I go? Okay, it's fine as of now. Fine. About the LinkedIn posting. Can you show? तो मेरे ग्रुप में मुझे एक मतलब भेज दो रिक्वेस्ट. फाइंड इट लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है. आज ही पोस्ट किया है. लेवल 2 के टॉपिक्स के उन्होंने पोस्ट किए हुए. यू विल कम टू नो. मैंने भी कुछ टॉपिक्स पोस्ट किया है, तो यू विल कम टू नो. Siddharth Mehta is there. Okay. But start practicing, start writing. So one article has to be shared in the WhatsApp group. One article you have to post it in the LinkedIn. ऐसे ही करना है आप practice. Okay. Done. I will share it my link ही भेज दूंगा. Done. Any other things you want to share or like to discuss? Any queries? No. Any other? Yeah, पीछे. Any queries? Okay. Okay then, let us end it. And जिसका नाम वो email नहीं है, मोबाइल में लिंक नहीं है, WhatsApp ग्रुप में ऐड नहीं है, LMS एक्टिव नहीं है, जो भी है तो प्लीज हाँ नीचे आज कर वो सॉल्व करके जाओ. ठीक है. Done. ठीक है. Yeah. Okay then, online session, online students, any other queries on your part? No sir. No sir. Yeah, exact. क्या बोल रहे हो? Online students, just wait. I am taking your attendance.
Okay, guys. Chalo, see you in the next week. Yeah. Okay. Yeah, online students, I'm closing the session then. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Any queries? No, sir. Sir, Okay. when will be next lecture, sir? वो आपको शेड्यूल आ जाएगा एवरी टाइम यू आपके मेल पे ऊपर शेड्यूल आ जाएगा ठीक है Okay, sir. Okay, no problem, sir. Thank you, sir. PDF